हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज सोलर सेल। So solar cell is a device that converts the light energy into electrical energy by using the photovoltaic effect. A solar cell is also known as a photovoltaic cell or PV cell. It is basically a PN junction diode whose electrical characteristics current voltage are varied when exposed to light. When more solar cells combine together to form modules, then it is known as a solar panel. Now the next point is the common single junction solar cell can produce a maximum open circuit voltage which is approximately from 0.25 to 0.6 volt. And it is a small value of voltage, but when we combine more solar cells in the solar panel, then we can produce a huge amount of electricity. अब बात करते हैं हम लोग as such, what do we mean by a photovoltaic effect? तो जब भी हमारी as such sun rays हमारे solar cell को touch करती है, then वहां से electrons emit होते हैं, and these electrons are known as photoelectrons, and this whole process is known as the photovoltaic effect. अब बात करें हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल की, तो सबसे पहले हमारा एज सच सेमीकंडक्टर की लेयर आती है जिसके ऊपर हमारी ग्लास की लेयर होती है. देन वी हैव आवर एन टाइप मटेरियल विच इज हाईली डोप्ड एंड हैज अ लेंथ ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर अप्रोक्सीमेटली. उसके बाद हमारा पी टाइप मटेरियल आता है विच इज लाइटली डोप्ड एंड इट हैज अ लेंथ ऑफ 300 माइक्रोमीटर एंड एट लास्ट वी हैव आवर मेटालिक बेस. अब बात करें हम लोग एज सच वर्किंग ऑफ सोलर सेल की. So a solar cell converts the sunlight into electricity. And जब भी हमारी सनलाइट ये सेल्स पे हिट करती है तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर पे वो फ्री हो जाते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन्स पुश करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी आइदर स्टोर्ड और इट कैन बी आइदर यूज्ड. नेक्स्ट वी हैव आवर VI characteristics. So the VI characteristics of solar cell lies in fourth quadrant, whereas PN junction diode के characteristics हमारे first और third quadrant में lie करते हैं. And in PN junction diode we provide voltage source using the battery while solar cell produces voltage itself. And ये हमारा VI characteristics का graph for solar cell, where VOC is the open circuit voltage and ISC is the short circuit current. Next we have our advantages and disadvantages जो कि आप as it is पढ़ सकते हैं. And at last we have our applications that are solar cell is used in toys, watches and calculator. They are used in electric furnace and all these points. You can just read them. So that was all for this video and I will see you in the next one.